So good morning everybody. Today we start the next point, types of lever. Yesterday we learned about the types of simple machines. Okay. So today we see about the types of lever. So you know in the lever there is a three parts. Okay. Which are stop the talking and attention here. It consists levers में कितनी parts होते हैं? 3 parts. How many? 3. Fulcrum and which are load, fulcrum and effort. Okay. These 3 parts are included in lever. Okay. So on the basis of position of fulcrum, मतलब fulcrum कहाँ पे है? उसके पोजीशन पे डिपेंड करते हैं उसके टाइप्स. ओके. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर. हाउ मेनी? 3 टाइप्स. फर्स्ट क्लास लेवर. ओके. और दिस कॉल्ड क्लास 1 लेवर. इज आल्सो कॉल्ड क्लास 1 लेवर. ओके. सेकंड क्लास 2 लेवर. And class 3 lever. So आपके माइंड में ठीक रहना चाहिए कि लेवर्स में 3 पार्ट रहते हैं, इफोर्ट, फुलक्रम एंड लोड. ओके. इफोर्ट, फुलक्रम एंड लोड. So on the basis of position of fulcrum, these types are given. Okay. Class 1, class 2, class 3. Now in class 1 lever, see the lever in which fulcrum at the center. You know lever means what? One type of rod and it move at a fixed point. It move at a fixed point. Suppose, okay, this is point and fulcrums work as a support. वो क्या करता है? सपोर्ट करता है और उसके पॉइंट के वो इजीली मूव करते हैं. ओके. अनदर एंड लोड and at other end effort. In class 1 lever, this fulcrum is at the center. Okay. When you put the any load on one side, okay, and when you apply the force on another side, force means what? Effort. जो force हम apply करते हैं objects पे उसको क्या कहते हैं? Effort. So when you apply the effort on another sides, then what happens? It works is easily done. Okay. This works is easily done. Means like a seesaw. Seesaw में क्या करते हैं? एक साइड पे लोड रखते हैं, दोनों साइड पे आप बैठते हैं. If you apply the force on that, it automatically at upper sides. Okay. But when that fulcrum is supported, okay, this fulcrum supported. So first class lever means class 1 lever means what? When fulcrum is in between the load and effort. Okay. Fulcrums when the fulcrum is in between the load and effort. Okay. So can you tell the examples? One is the seesaw. Okay. Another one. ऐसे एग्जाम्पल जो एक ही पॉइंट पे अराउंड मूव हो सकती है, जैसे कि फुलक्रम्स उसमें सेंटर में रहते हैं. सीजर्स. सीजर्स में देखो क्या रहता है, देखो आपके इसमें बुक्स में है सीजर्स. इफ यू टर्न द पेज 112. Scissors have also one screw. Okay. And with the help of screw that 2 blades are moved. So means what? It a fulcrum means it's a support to it, and when you apply the force at that with the help of hand means we apply the effort.
एंड लोड मीन्स व्हाट, दैट पीस ऑफ पेपर. ओके, मीन्स यहाँ पे क्या है, फुलक्रम सेंटर्स में, लोड एंड इफोर्ट्स के सेंटर्स में. सो डू यू अंडरस्टूड क्लास 1 लेवल? Yes. Okay, class 1 level means fulcrum is center between the, is at center and in between the load and effort. In class 2 level, what happened? See, the lever in which load is located in between the fulcrum and effort. See, उसमें क्या रहता है? When load is between the fulcrum and effort. Fulcrum यहाँ पे मतलब here. Okay? I denote it with triangle. So when load is between the fulcrum and effort, there is the class 2 levels. मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अदर एंड पे कर रहे हैं, लोड सेंटर में है, लोड मीन्स एनीथिंग. ओके, एंड सपोर्टिंग पॉइंट जो फुलक्रम से वो क्या है, एट अनदर एंड. ओके, दिस इज एट अनदर एंड. सो दिस इज द क्लास 2 लेवल. जैसे कि आपको एग्जांपल्स बताए, देखो व्हील बैरो. Wheel barrow, this in this wheel barrow, that wheel is a fulcrum. Okay, means due to the help of that wheel, this barrow can move. Okay, and where is the force is applied? Efforts means with the help of hand we applied the force. Means it's the effort, means it has the one end, and in between the effort and fulcrum is the load. जो थिंग्स डाले उस बैरोज में वो क्या है, लोड. ओके, मीन्स व्हेन लोड इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम इज द क्लास 2 लेवल. तो कौन सा टाइप्स हो गया, क्लास 2 लेवल. जैसे कि आपने बॉटल ओपनर्स का एग्जांपल्स दिया है. बॉटल ओपनर्स, इन बॉटल ओपनर्स आल्सो द फुलक्रम इज एट सेंटर. ओके, sorry, load is at center and fulcrum and efforts at the at both. Okay, so it is the class 2 level. Then class 3 level. Class 3 level, third type. Class 3 levers, a lever in which effort is located in between the fulcrum and load. In between the fulcrum and load, what is effort? Okay, what is effort? Means this fulcrum is at one end and effort means force जो अप्लाई कर रहे हो कहाँ पे होगा, अप्लाई सेंटर में. ओके, एंड लोड का होगा एट वन. ओके, when effort is between the fulcrum and load, not force, the fulcrum. When the effort is come in between the fulcrum and load is the class 3 level. Examples, same. Sir, tweezers, simple examples. देखो tweezers. Tweezers means what? One type of clutcher type like this. So when you keep the cube of suppose sugar. Okay, you have to take cube of sugar with the help of that tweezers. तो हम फोर्स कहाँ अप्लाई करेंगे, एंड पे करते हैं क्या, नो, सेंटर में. ओके, सेंटर्स में हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं वहाँ पे. और जो लोड है वो कहाँ रहता है, नीचे में, एट वन एंड. ओके, देयर इज द लोड. एंड फुलक्रम्स मीन्स हियर, फुलक्रम जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो क्या रहता है, एट अनदर साइड. मीन्स हियर द इफोर्ट इज एट द सेंटर. ओके, इफोर्ट कहाँ पे है, सेंटर. मीन्स व्हेन द इफोर्ट इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड लोड, it is the class 3 lever or is called lever of third order. जैसे कि ब्रूम से एग्जांपल से, ब्रूम भी ऐसे ही एग्जांपल. व्हाट, वो जो 11 और 12 के
हाँ, फोर्सेप, दैट कॉल्ड फोर्सेप्स। इसको क्या कहते हैं? फोर्सेप्स बोलते हैं। ओके, हाँ, जो हाँ प्रैक्टिकल्स के लिए उसकी प्रैक्टिकल बॉक्स रहता है, उसमें सब थिंग्स रहते हैं। फोर्सेप्स, दैट कॉल्ड फोर्सेप्स। ओके, so forceps is called tweezers also, and it is the example of class 3 levers. So have you any confusion in this topic? No. So tell me, in first class, position of the fulcrum at center. Okay, C means like that. Okay, effort, fulcrum, load. In second, position of fulcrum in second. Huh? It is in third class. Force, effort, fulcrum, load, effort. Okay, means effort at one end. And in third class, fulcrum, effort, load. Okay, effort is at center. Okay, so it's a very simple types. See, on page number 113, one activity is given about the hand. See, when you take something in your hand, any load, okay, when you take, suppose I take a duster on my hand, okay, means it is a load. This is the load. And where is my fulcrum? Yes, at elbow. Okay, it is supporting point. Yes. It is supporting point. That's why I can easily handle it or lift it. Okay, and our muscles is effort. Okay, means with the help of my muscles, I exert the pressure. Yes. Okay, yes. Means it is a one type of, which type of? Load, fulcrum, effort. Means which? Load, fulcrum, effort. First class lever. Okay, it is one type of first class lever. Yes. So, like that, there is the types of the levers. Any have confusion? No. No. Okay. So now turn the page. Okay, so the PDF of question and answers I send in your Google Classroom. Okay. Yes. So